हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का श्वेता की लाइव में। आदित्य सिंह रॉय, हेलो आदित्य, वेलकम है आपका। कहाँ से बोल रहे हो आप? आदित्य, आप कहाँ से बोल रहे हो? भाई फटाफट बताते जाइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे। मैं घर से बोल रहा हूँ। मैं भी अपने घर से ही बोल रही हूँ। मैं भी अपने घर से ही बोल रही हूँ। और अरे सच में आप घर में हैं? हमें शक है जी। क्या शक है जी आपको? मैंने तो आपकी सिटी का नाम पूछा कि आप कहाँ से रहते हो। घर में, घर से तो सभी लोग बोलते हैं और घर पे रहते भी सब लोग हैं। तो जय जोहार संगवारी हो, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जो भी छत्तीसगढ़ से होंगे आप लोग, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। जल्दी जल्दी बताओ यदि हो छत्तीसगढ़ से कोई तो। ट्विटी महा जी, जंगल से हैं। अच्छा, आप जंगल से हो, आदिवासी हो आप? अच्छी बात है, आदिवासी हो। और कोई कहीं से नहीं बोल रहा है भाई इतने आप कौन से? अच्छा, आप कौन से वासी हो? मैं घर वासी हूँ। आप आदिवासी हो, मैं घर वासी हूँ। आपने अभी बोला ना कि आप घर से बोल रहे हो। और भाई इतने सारे लोग देख रहे हो, आप लोग भी बता दो। बताने का कोई टैक्स नहीं लगता है यहाँ पे। वही तो मैं भी बोली, घर में तो सब रहते हैं। हाँ, वही तो मैं पहले ही बोली, कोई लकड़ी के घर में रहता है, कोई मार्बल के घर में रहता है। तो आपने क्या बोला? घर से बोल रहा हूँ। मगर आप कौन से वासी हो? रायपुर वासी? भाई रायपुर वासी हूँ मैं। छत्तीसगढ़ वासी हूँ मैं। देखो इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं बता रहा है कि हम कहाँ से हैं करके। प्लीज़ सब कोई बताते जाइए कि आप लोग कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से देख रहे हो। 9 लोगों की वॉचिंग दिखा रही है मेरी लाइव में। मैंने बोला ना भाई, कोई टैक्स नहीं लगता है यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लगता, ना ही आपका बैंक बैलेंस ख़त्म होने वाला है। रायपुर में असली सुना है? अरे हम अरे हम सिहोरी से बोल रहे हैं, बोलते हैं। सीहोर से? सिहोरी या सीहोर से? कहाँ से बोल रहे हो आप? सीहोर है या सिहोरी है, वही बता दो। देखो, बाकी सबका लगता है टैक्स कटने वाला है, इसीलिए बिल्कुल चुप है। राजस्थान सिहोरी? अच्छा, राजस्थान सिहोरी।
ज़िला है हमारा। अच्छा। और बताइए। सीहो सिरोही, सॉरी। हाँ, तो ये यहाँ इधर भोपाल के पास भी है ना, सीहोर बोलते हैं उसको, तो मेरा ध्यान उधर ही गया था। नंदनवन सुना है रायपुर में? हाँ, नंदनवन सुना है, गया भी है, मतलब गई भी हूँ, मैं घूम के आ गई हूँ। आप घूमे हो कि नहीं नंदनवन? आप बोलो ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ, जब आप लोग बोलोगे ना तो उसका रिप्लाई मैं दूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या बोलूँ अकेले, ऐसा लगता है। हमारा महल आदिवासी घर वहीं पर है। अच्छा, आपका घर आदिवासी घर वहीं पे है। अच्छा। और कुछ बोलोगे आप लोग? क्या साउंड नहीं आ रही है? नहीं, साउंड तो आ रही है, अनम्यूट है। कैसे नहीं आ रही है आपको? आदिवासी तो लकड़ी का है घर बना, अच्छा लकड़ी का घर बना सकते हैं, तो वही छोटा सा 5 फ्लोर का घर है जी। अच्छा, 5 फ्लोर का घर आपको आदिवासी का घर लगता है? आप बोलो ना, मैं तो क्या करूँगा बात। आपने बोलूँगा तो क्या बात करें। अच्छा, यही तो मैं भी सोचती हूँ, मैं क्या बोलूँ, आप लोग बोलते जाओ तो फिर मैं रिप्लाई दूँगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैं क्या बोलूँ। ये आदिवासी भैया कहाँ गए? 5 फ्लोर में रह के आदिवासी बताते अपने आप को? 5 फ्लोर का घर लकड़ी से बनता है? अच्छा, रायपुर में रिंग रोड पे घर है हमारा। अच्छा, लकड़ी का? लकड़ी का है क्या? लकड़ी और मिट्टी। अच्छा, मिला हुआ है। आपका पोस्ट फोटो सही नहीं दिखता है। अच्छा, कौन सा, मतलब जो वीडियो अपलोड करती हूँ वो क्या? पता नहीं हो क्वालिटी ना, ऐसे जब हम बनाते हैं ना वीडियो तो ठीक रहता है, और अपलोड करने के बाद में ना पता नहीं क्यों क्वालिटी ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है। हाँ जी, लकड़ी का है। अच्छा, लेकिन अच्छा है, लकड़ी का है तो गर्मी तो नहीं लगती होगी, गर्मी से तो राहत मिलती होगी उसमें। हाँ, क्वालिटी सेलेक्ट करके अपलोड करके डाला करो। अच्छा, पता नहीं, ये तो मुझे नहीं आता है। अभी अभी तो वैसे चैनल तो स्टार्ट मैं कर ली थी, पर पहले भी ऐसे ही डालती थी,
और अभी भी ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है, मैं जैसे कि अपना ही वीडियो दूसरे की फाइल में मोबाइल पे देखती हूँ ना, तो बाद में पता नहीं कैसे ऐसे ब्लर हो जाता है। फिर मुझे भी बहुत तकलीफ होता है, हाय मैंने ऐसे वीडियो बनाया है ऐसा लगता है। बहुत गर्मी लगता है उसके लिए आदिवासी एसी अच्छा लगवा रखा है। अच्छा है। अच्छा है, अच्छा, हमें भी वैसे ही वाला दे देना हायर कंपनी का। सस्ता भी होगा ना, सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा होगा। अभी सीखना पड़ेगा मुझे, मतलब अपलोड करने के वक्त क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है क्या? नहीं, बनाती हूँ ना तब तो ठीक आता है, क्लियर रहता है, वो अपलोड करने के बाद होता है। और जैसे धूप में बनाओ ना तो धूप वाला तो और बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है। हाँ, सस्ता है भी है और अच्छा भी है, मगर दे नहीं सकते। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दे सकते तो वैसे लगा है हमारे घर ऑल्टास का एक है। आपको आप फ़ोटो से नहीं दिखता है, हाँ, आपको आप फ़ोटो से नहीं दिखता है मतलब इतना देख के तो लिया भाई, कम है क्या? नहीं, कम नहीं है भाई। ठीक है, ठीक। अच्छा, कोशिश करूँगी ठीक करने की, पर क्या मुझे ना वो आता नहीं है ना, जैसे बोल रहे हो ना आप कि अपलोड करने से पहले सेलेक्ट का ऑप्शन आता है करके, क्वालिटी ठीक करने का, वो पता नहीं अभी मुझे आता नहीं है, सीखना पड़ेगा। बोल देना जब स्टार्ट करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता ना जैसे बोलने वोलने का, फिर धीरे धीरे हो जाता है। आपकी शक्ल नहीं दिखती है मतलब वीडियो में ना, जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें। ये सिटी का ही लॉन्ग है तो अच्छा है, दिखते हैं हमारी तरह आदिवासी नहीं है कोई नहीं, आप भी फ़िल्टर लगा लिया करो भाई, आजकल फ़िल्टर का ही कमाल है। फेयर एंड लवली, हाँ फेयर एंड लवली, आजकल फेयर एंड लवली क्रीम ये सब फेल है, ये सब फेल है। ये क्या होता है? आदिवासी भवन। आदिवासी भवन ही कहाँ होता है? अरे लिखा हुआ जहाँ से हम स्कूल जाते। कहाँ मिलता है ये प्रोडक्ट ये इंस्टा पे मिलता है। सीखो ना, हाँ सीखना पड़ेगा, मतलब अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर तो किसी से पूछती हूँ मैं, या तो फिर देखती हूँ यूट्यूब पे कि कैसे अपलोड करने से पहले क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन हो ही जाता है, कितनों भी अच्छे से आप शूट किए रहो, लेकिन जैसे ही अपलोड करोगे ना आप तो थोड़ा सा क्वालिटी उसमें अलग ही आ जाता है, चेंज हो ही जाता है, फ़र्क आता है क्वालिटी में।
अच्छा, हमारे यहाँ तो मिट्टी लगा के ही रहते हैं। भाई हम आदिवासी नहीं है, हम नहीं लगा सकते। हमारे जहाँ से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पर भी आदिवासी भवन लिखा हुआ है, एस में हाँ भी लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है, वो भवन का नाम है बेटा, आदिवासी। चलो इधर आ। आदिवासी होंगे तो कैसे कपड़े पहन के पूछो ना। अरे यार तू इधर आना। पूछो ना। मैं भी आदिवासी हूँ। अच्छा, आप भी आदिवासी बन गए क्या? आदिवासी लोग तो मिट्टी से ही सब मेकअप करते हैं। हाँ सही है, करते होंगे। काश हमारे नसीब में भी फेयर एंड लवली होती। अच्छा, आपकी शक्ल तो बताओ सही। बताओ सही, दिखाओ सही, ऐसे बोल रहे हो क्या? मीना राजस्थान से हो क्या? हाँ दिखाओ। अच्छा सविता जी दिखा ही दी भाई को फेस। अच्छा भाई को दिखा ही दो भाई को फेस। अच्छा नहीं भाई, मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, अभी मैं नहीं आती। डर जाओगे रात में। अब भी आदिवासी हो। नहीं, रायपुर भिलाई वाले लोग आदिवासी नहीं होते। अच्छा आदिवासी दिखते हैं, हाँ तो फिर वैसे ही समझ लो। ठीक है, मैं भी नींद लूँगा। अच्छा ओके ठीक है, आप तो सिटी वाले हो। अच्छा नींद लूँगा। ये कितने की आती है? 50 की या 20 की? नींद बहुत महंगी होती है भाई, ना ही तो 50 की होती है और ना ही 20 की होती, बहुत महंगी होती है नींद। सबको बहुत प्यारी होती है नींद। मगर हम तो आदिवासी वाला हवर सोते हैं। अच्छा बिना टेंशन के। हाँ सही है, बिना टेंशन के सोओगे तभी आदमी स्वस्थ रहता है। टेंशन लेके सोओगे तो फिर ना स्वस्थ रहोगे और ना पूरा दिन ठीक से रह पाओगे। अच्छा ये क्या है?
ये ऐसा वाला कार्टून पहले आता था ना, ये जो नीचे भेजे हो आप। क्या बात है सरिता जी, डॉक्टर हो क्या आप? नहीं भाई, डॉक्टर होती तो इतनी रात में मैं नहीं जगती। और ना ही यूट्यूब पे लाइव करते रहती अभी। डॉक्टर नहीं बन पाई ना, इसी वजह से। अभी तो बस एक ही सपना कहो, चाहे कुछ भी कहो। जल्दी जल्दी आप लोग साथ देना मेरे है ना, तो मैं भी ताकि कुछ बन पाऊँ यूट्यूब पे। हाँ हाँ, सुबह। तो आप कौन सी जॉब करते हो? अच्छा, नहीं मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। यूट्यूब छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर लोग लाइव नहीं आते हैं। अगर कोई जॉब रहता तो फिर टेंशन ही नहीं रहती ना। वैसे आजकल कोई जॉब है तो भी यूट्यूब पे आ रहा है, और नहीं है तो भी आजकल सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमें देख लीजिए, आदिवासी गवर्नमेंट टीचर है, फिर भी लाइव में आ गए आपकी। अच्छा, थैंक यू, आप आए, ज्वाइन किए लाइव को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही तो बोल रही हूँ, आजकल ऐसे नहीं है कि अगर कोई एक जॉब कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आजकल एक एक काम तो अपना कर ही रहे हैं, साथ ही साथ और दूसरा तीसरा भी करते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो हो सके उनसे। अच्छा, लाइफ इज़ गर्ल, हाय हाय, सॉरी, हाय गर्ल, वेलकम है आपका। आज काफ़ी लेट आया आप, तो सॉरी। और कैसी हो तो? I am only Adivashi, but I have written a little bit. I have been taught by my family members. सो जाओ ना बेटा, बहुत टाइम हो गया, चलो। Everyone here is very अच्छा, नहीं बंद करो सनी। You did not tell me you were from in Raipur city.
भाई आप हिंदी क्या हो, टीचर हो, है ना? नहीं करो सर, कितने बार बोले